The great traditions of Sanatana Vedic Dharma, which we see all over our sacred Bharatvarsha, is rooted in, founded upon the sacred scriptures of Sanatana Vedic Dharma, especially the scriptures which have been composed by Maharishi Vedavyasa. In the tradition of Mahaprabhu Sri Jagannatha, the descriptions, narrations are given especially in Skanda Purana, elaborately. And whether we see Skanda Purana or Brahma Purana or some other sacred scripture, one thing becomes clear, that Lord Jagannath, who is present now in the form of Chaturdha Daru Vigraha, in the four-fold wooden form, is none other than the Paramatma, Parameshwara, Param Brahma, the Supreme God. He is not an avatara, he is the avatari. This is very clear. So, because he is Jagatanatha meaning he is the Lord of the universe. All beings, not only on this planet Earth, but all beings in the entire universe have an equal right, entitlement to have his darshan. That is not possible if Lord Jagannath stays within the confines of his temple. So, making a departure in the established principles of Sanatana Vedic Dharma, that Mula Vigrahas do not leave the sanctum sanctorum and the throne on which they have been consecrated. Here, Lord Jagannath himself, at the time of his installation in the Adi temple by Lord Brahma, himself declared that he himself, along with Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Chakraraj Sudarshana, will go out of his temple on two occasions. One, on the day of his holy manifestation, which is Jyeshta Purnima, the manifestation of the Supreme Lord as the Daru Vigraha, which is Jyeshta Purnima. He said, Snana Yatra is to be held. I will go out of my temple to give darshan to everyone on my day of my manifestation, that is the day of my birth. And then thereafter, I will celebrate 9 days festival called Rath Yatra, wherein I, along with Balabhadra and Subhadra and Chakra Sudarshan, will visit my birthplace, Gundicha Mandapam, for 7 days. This is the Lord's wish, because he says that I love my birthplace very much, and I've stayed there for a very, very long time before I came to this temple of mine. But the real hidden intention of the Lord is to give darshan to all beings in the entire universe. So that is why Lord Jagannath comes out. And so what do we find? That particularly on the Sri Gundicha Jatra, where the Lord travels from his main temple, Sri Mandira, to Gundicha temple, which is celebrated as the most major event of the 9 days festival, we find people from all over the world, transcending all distinctions of caste, color, nationality and religion, thronging the Grand Road to participate in his festival, because he is the Lord of the universe. He is the one Lord who is worshipped in all religions and all religious denominations in various names and forms. But the Lord is one, and that one Lord has appeared in this form. So he is the one Lord who belongs to everyone in humanity. So this Rath Yatra is the festival for the entire humanity to manifest the spirit of oneness of God and the essential spirit of universal brotherhood, harmony, love and unity among entire mankind. तो
द्वापर युग में द्वारिका नाथ धाम गुजरात में रह गए, कली युग में पूर्व दिशा पे श्री श्री जगन्नाथ धाम। ये जो जगन्नाथ धाम यहाँ चतुर्धाम मूर्ति बैठते हैं, ये चतुर्धाम मूर्ति जी का ये जो सालों का एक बार रथ यात्रा होता है, ये रथ यात्रा ये 27 तारीख ये जो कार फेस्टिवल शुरू होगा तो 9 दिन यात्रा करेंगे गुंडीचा मंदिर। ये आज का दिन में भगवान का ये जो रथ आज प्रस्तुत हो रहा है और कम से कम भी सारा काम भी पूरा हो गया, थोड़ी जो कुछ बचा हुआ है ये 27 तारीख के अंदर, 27 नहीं 25 तारीख के अंदर ये पूरा हो जाएगा। ये भगवान चतुर्धाम मूर्ति रत्न सिंहासन छोड़ के आएंगे, रथ का ऊपर विजय करेंगे, फिर गुंडीचा यात्रा करेंगे, फिर जब 9 दिन व्याप जाएगा 9वां दिन में फिर वापस यात्रा आएंगे, फिर दूसरा दिन सोने का श्रृंगार होंगे। तो ये है जगन्नाथ जी का लीला। ये मानवीय लीला करने के लिए मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं और कोई धाम में भगवान बाहर नहीं आते हैं। ये जगन्नाथ स्वयं ये जगत के नाथ है, सबको ये मानवीय लीला कर रहे हैं, इसलिए सबका साथ मिलने के लिए अपना समझकर अपने बनाने के लिए ये बाहर को आते हैं। भक्तों भगवान एकाकार हो जाएंगे, कोई ये दीवार नहीं रहेगा। ये भगवान का इच्छा, ये सालों में जो एक बार होते हैं, सारा दुनिया से ये भक्त लोग आते हैं भगवान का ये जो अपूर्व रथ को दर्शन करने के लिए। आज ये तीनों रथ सिंहद्वार का सामने आकर नजदीक में खड़ा है, फिर समय आएगा वो तो सिंहद्वार में खड़ा होंगे। 27 तारीख को भगवान आएंगे। देखिए बलभद्र जहाँ बैठते हैं, 3 रथ जो है ये तालध्वज है, वो आगे चलते हैं, फिर बीच में चलते हैं माँ सुभद्रा और सुदर्शन बैठते हैं, ये देवी दलन है, और नंदी घोष जो भगवान जगन्नाथ बैठते हैं ये पीछे चलते हैं। ये 3 रथ तालध्वज, देवदलन और नंदी घोष ये तीनों जब चलते हैं बरदान में, स्वर्ग से देवलोक और पाताल से नागलोक, ये संसार में सारा संसार उनको दर्शन करने के लिए आत्मविभोर हो जाते हैं। सबका दिल भगवान का पैर में चरण में आ जाता है। भगवान का कृपा लाभ करने के लिए हम सब दर्शन करते हैं। शरीर को कितना धूप हो जाए, कितना भी भूख लगे, कुछ पता नहीं चलता है। भगवान ये रथ को भगवान को दर्शन करते करते जब ये भगवान का ये लीला को दर्शन करने के लिए हम सब कोई उनका दीवाना है। भगवान का हम प्रार्थना करते हैं, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए, भाईचारा प्रकट कीजिए। भाईचारा होगा तो मानविकता जागृत होगा, मानविकता जागृत होगा तो मानव जीवन सार्थक होगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। Да, this preparation просто amazing. More people trying to make this appearance day Jagannatha outside. All Radha very carefully the paint, some wood repair. No, this просто for me this big realization. This I'm very inspired. So more people, local people, every day make this Radha. This every Radha Yatra, all the world, but Puri Radha special. Да, I'm Puri now first time in Radha Yatra. Before I'm also come Puri more time, but Radha Yatra this first time. Да, I'm very inspired to look to Jagannath first time, but I'm look every day in Patitapavana Jagannath, but Baladev, Subhadra, Jagannath, Puri not allowed for foreign people, and very inspired to look first time. Many people are coming from your country. No, yes, some people maybe come also. Yes. How they like? No, this project, I meditation, participate to Harinam Sankirtan near Radha, dancing, maybe chanting, if possible. What's your feelings now? Big chariot is constructed right now. After some days will be Rath Yatra. How do you see the atmosphere right now? Здесь такой атмосфера, shanti, and also такой my heart is Purnam. I wait, but I don't know what I'm wait. But if you I'm look, my experience may be better. Daudži lila das.
Я в Жилиладас, Искон Мандир.